Hey everyone, welcome to Blooming Minds. Today we are going to discuss some MCQs based on chapter 6th of class 12 history. Chapter name is Bhakti Sufi tradition. So what are we waiting for? Let's get started with question first. Jangama or wandering monks belonged to which community? Jangama or wandering monks belonged to which community? Options are Alvars, Lingayats, Kabir Panthis, Jogis. आप अपने आंसर साथ साथ में कीजिए और लास्ट में मुझे बताना आपके कितने आंसर सही हैं. So right answer is option second, Lingayats. जंगमा और वंडरिंग मॉन्क्स लिंगायत्स कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ दीज वाज अ पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप? पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप. ऑप्शंस आर डांस, म्यूजिक, कवाली, ऑल ऑफ दीज. जल्दी से आंसर दें. देखिए, इसमें डांस भी है, म्यूजिक भी है, कवाली भी है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेख निजामुद्दीन्स hospice comprised several small rooms and a big hall known as several small rooms and a big hall known as. Options are Zamaat Khana, Langar, Klandars, Ziyarat. Zamaat Khana, Langar, Klandars, Ziyarat. So right answer is option first, Zamaat Khana. Question number fourth, what is the literal meaning of the term silsila? Literal meaning of the term silsila. Options are a chain, disciple, devotion without attributes. जल्दी से आंसर करें. So right answer is option first, a chain. Silsila means a chain. Question number 5, which of these was the capital of Akbar? Capital of Akbar. Options are Lahore, Multan, Delhi, Fatehpur Sikri. Lahore, Multan, Delhi, Fatehpur Sikri. So right answer is option fourth, Fatehpur Sikri. Question number 6, Karaikal Ammayar was a devotee of. Karaikal Ammayar was a devotee of. Options are Krishna, Rama, Shiv, Brahma. जल्दी से आंसर करें. So right answer is option third, Shiv. Karaikal Ammayar was a devotee of Shiv. Question number 7th. Before starting this question, I am requesting you
If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and don't forget to press on bell icon. Question number 7. Who composed the Prem Akhyan Padmavat? Who composed the Prem Akhyan Padmavat? Options are Amir Khusrau, Baba Farid, Malik Muhammad Jaisi, Ratan Sen. So right answer is option 3rd, Malik Muhammad Jaisi. Next question. Question number 8. Alvars or Nayanars were the bhakts of. Alvars and Nayanars were the bhakts of. Options are Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. So right answer is option 3rd, Tamil Nadu. Next question. Number 9th. The 9th Guru whose compositions were compiled in the Guru Granth Sahib was. 9th Guru whose compositions were compiled in the Guru Granth Sahib was. Options are Guru Tegh Bahadur, Baba Guru Nanak, Guru Gobind Singh, Guru Arjan. Give answer fast. So right answer is option 1st, Guru Tegh Bahadur. Question number 10th. What is Sharia? Options are Muslim Sufi saints, fasting during the month of Ramzan, laws governing the Muslim community, giving alms. So right answer is option 3, laws governing the Muslim community. Next question. Question number 11th. Vishnu Bhakt saints were known as. Options are Nayanar, Veer Shaiv, Alvar, Zimmi. Give answer fast. So right answer is option 3, Alvar. Vishnu Bhakt saints were known as Alvar. Question number 12th. Earliest bhakti movements were led by. Options are Alvars and Mayunar, Alvars and Purvars, Alvars and Nayanars, Lingayats and Nayanars. So right answer is option 3, Alvars and Nayanars. Earliest bhakti movements were led by Alvars and Nayanars. Question number 13. What are the devotees of Vishnu called? Devotees of Vishnu called. Options are Alvars, Nayanars, Lingayats, Chishti. Devotees of Vishnu, Vishnu Bhakt. So right answer is option 1st, Alvars.
Next question. Question number 14th. Which group challenged the idea of caste and the pollution attributed to certain groups by Brahmanas? Which group challenged the idea of caste and pollution attributed to certain groups by Brahmanas? Options are Alvars, Lingayats, Nayanars, Purvars. So right answer is option second, Lingayats. Question number 15th. Lingayats were majorly based in. Options are Maharashtra, Karnataka, Punjab, Uttar Pradesh. Maharashtra, Karnataka, Punjab, Uttar Pradesh. Right answer is option second, Karnataka. Question number 16th. The Sufi saint who was addressed as Sultan ul Mashriq by his disciples was. Sultan ul Mashriq by his disciples was. Options are Sheikh Moinuddin Sizzi, Sheikh Fariduddin Ganzai Shakar, Sheikh Salim Chishti, Sheikh Nizamuddin Aulia. Give answer fast. So right answer is option fourth, Sheikh Nizamuddin Aulia. Next question. Question number 17th. Identify this image and write its name. You all have to identify this image. So answer is, it is a 15th century stone sculpture depicting Krishna playing the flute. 15th century का एक stone sculpture है जिसमें क्या डिपिक्ट किया हुआ है? कृष्णा फ्लूट, बांसुरी बजा रहे हैं. Question number 18th. Identify the image and write its name. So answer is, it is 12th century bronze image of Kraikal Ammaiyar. 12th century की ब्रॉन्ज इमेज है किसकी? क्राइकल अमैयार की. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19th. मैच द फॉलोइंग. आप भी साथ साथ में मैच करें. निर्गुण, निर्गुण को मैच करेंगे विदाउट एट्रीब्यूट्स के साथ. निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स. अलग, द अनसीन. अलग, द अनसीन. शब्द, साउंड. शब्द, साउंड. ससुना विद एट्रीब्यूट्स. ससुना विद एट्रीब्यूट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द टू वुमेन पोएट सेंस ऑफ तमिलनाडु. टू वुमेन पोएट सेंस ऑफ तमिलनाडु. Answer is Andal
and Kraikal. Andal and Kraikal. Next. Question number 21. Dash is the best known woman poet within the Bhakti tradition. Best known woman poet within the Bhakti tradition. Answer is Mirabai. Next. Question number 22. In the 15th century, Dash emerged as one of the leading proponents of Vaishnavism in Assam. Leading proponents of Vaishnavism in Assam. Answer is Shankradeva. Question number 23rd. Who is Ulama? Options are devotees of Shiv, devotees of Vishnu, Muslim Sufi saints, scholars of Islamic studies. Give answer fast. So right answer is option D, scholars of Islamic studies. Question number 24. Which of the following statements is incorrect regarding Kraikal Ammaiyar? Statement is incorrect regarding Kraikal Ammaiyar. तो देखते हैं क्या इनकरेक्ट है. She was a devotee of Shiv. वो शिव भक्त थी. शिव भक्त तो थी. She adopted the path of extreme asceticism. Asceticism होता है तपस्या. उन्होंने एक्सट्रीम asceticism का पाथ अपनाया. तो ये भी सही है. Her compositions were preserved within the Alwar tradition. Compositions होती हैं रचनाएं. तो ये पॉइंट तो रॉन्ग है. Her compositions posed a challenge to patriarchal norms. उनकी कंपोजिशन ने एक चैलेंज दिया था पैट्रियार्चल नॉर्म्स को. पैट्रियार्चल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें मैन का डोमिनेंस प्लेस हो. तो ये भी सही है. तो इनकरेक्ट कौन सा आ गया? ऑप्शन सी. हर कंपोजिशंस वर प्रिजर्व्ड विद इन द अलवार ट्रेडिशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 25th. Find out from the following pairs which one is correctly matched. Correctly matched. Dekh, food. Khanka, pilgrimage. Futu, charity. Murids, master. जल्दी से आंसर दें. कौन सा करेक्टली मैच्ड है? सो आंसर इज फुतू चैरिटी. ये करेक्टली मैच्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द भक्ति सेंट ऑफ महाभारत? भक्ति सेंट ऑफ महाभारत. आंसर इज तुकाराम. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब इन 2 ways चैतन्य महाप्रभु. आंसर इज ही वॉज बोर्न इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन अ ब्राह्मण फैमिली. ही वॉज बोर्न इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन अ ब्राह्मण फैमिली. He was the follower of Lord Krishna. He was the follower of Lord Krishna. Question number 28. Given below are 2 statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. ध्यान से इन्हें देखें. Assertion: Lingayats did not practice funerary rites such as cremation prescribed in the Dharma Shastras. Reason में क्या है? Lingayats believe that on death
The devotee will be united with Shiv and will not return to this world. Assertion में क्या है देखिए, लिंगायट्स funerary rites जैसे कि क्रिमेशन उनमें बिलीव नहीं करते, वो प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि धर्मशास्त्र में प्रेस्क्राइब किया गया है. रीजन में क्या है, लिंगायट्स मानते हैं कि डेथ के बाद एक डिवोटी, एक भक्त शिव के साथ मिल जाएगा और इस वर्ल्ड में दोबारा नहीं आएगा. ऑप्शन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग. बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. A is correct but R is not correct. R is correct but A is not correct. जल्दी से इसका आंसर दें. होप आपने कर लिया. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन. असर्शन में देखिए, pilgrimage called ziyarat to tombs of Sufi saints is prevalent all over the Muslim world. Reason में क्या है, the Khanqah was the center of social life. अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. A is correct but R is not correct. R is correct but A is not correct. जल्दी से इसका भी आंसर करें. So right answer is option B. Both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Question number 30. Consider the following statements regarding Kabir. ध्यान से देखें statements. Verses of Kabir are compiled in three distinct traditions. Kabir's poems are available only in the Urdu language. Kabir used many traditions to describe the ultimate reality. Kabir called ultimate reality only as Allah. Which of the given statements is or are incorrect? यहाँ हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. देखिए, वर्सेस ऑफ कबीर आर कंपाइल्ड इन थ्री डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन, तो ये सही है. कबीर्स पोइम आर अवेलेबल ओनली इन द उर्दू लैंग्वेज, तो ये रॉन्ग है. अदर लैंग्वेजेस में भी है. कबीर यूज्ड मैनी ट्रेडिशन टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी, ये सही है. अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसने बहुत से ट्रेडिशन का यूज किया. कबीर कॉल्ड अल्टीमेट रियलिटी ओनली एज अल्लाह, तो ये रॉन्ग है. तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. ऑप्शन देख लेते हैं. सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आ गया हमारा बी. ओके, सो दीज आर MCQs. होप यू ऑल अंडरस्टूड. कोई भी डाउट रह गया है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू गाइज.